तो किस वजह से हम लोग सोडियम को इजीली चाकू से कट सकते हैं? क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही वीक है. दैट्स व्हाई इट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंटिफिक फेनोमेनल फैक्ट्स. आज का मेरा टॉपिक है सोडियम को लेके कि सोडियम क्या चीज़ है. एक्चुअली सोडियम इज अ केमिकल एलिमेंट. इट्स एन ऑर्डरलेस सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल. इसका कोई गंध नहीं है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसका जो कलर होता है ये सिल्वर का जैसा कलर होता है इस मेटल का. It belongs to alkali metal. Why it belongs to alkali metal? As it is placed in the first group or you can say first column and third period of the modern periodic table. ये हम लोगों का जो modern periodic table है उसमें पहला ग्रुप में और थर्ड पीरियड में ये मौजूद है. Its symbol is Na that derives from the Latin that is natrium for natron and soda in English. It was discovered in 1807 by the English chemist named Humphrey Davy from electrolysis of caustic soda. जब कास्टिक सोडा को इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया था तभी हम्फ्री डावी ने इस सोडियम का खोज किया जिसको हम लोग लाई भी बोल सकते हैं, LYE लाई. और इसका जो केमिकल फार्मूला है जो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं यह है NaOH जिसको हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 and it has 11 electrons as well as 11 protons and it has mass of 22.989769 U. Here U means atomic mass unit and it is considered as 23 U means 23 atomic mass unit. तो इसका मास हम लोग कंसिडर करते हैं 23 U. Clear? It has one valence electron in its outermost shell or you can say orbit and it has only one as valency and it is electropositive in nature. Why it is electropositive? As it can able to donate or lose electron. It is solid at room temperature. Sodium in its pure form is very much reactive. It is stored under kerosene or other oil. Why it is stored under kerosene or any other oil? क्यों इसको केरोसिन का नीचे में डुबो के रखना चाहिए? As it can vigorously catch fire. As it is highly reactive. That's why. क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जब कोई आउटर एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट होता है ये झट से आग पकड़ सकता है. That's why in order to prevent sodium from explosion it is immersed under kerosene or any other oil. It is not found in its pure form in nature due to its हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी. इसको हम लोग प्योर फॉर्म में क्यों नहीं मिलेगा नेचर में? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ये हमेशा मिक्सचर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में मिलता है हमें नेचर में. इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 0.97 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर. इसका डेंसिटी कितना होता है? 0.97 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में at 20 degrees Celsius or you can say 68 degree Fahrenheit. It has low melting and low boiling point. Contact of metallic sodium with skin, eyes or mucous membranes causes severe burns. Thermal burns may also occur due to ignition of the metal and liberates hydrogen gas. अगर ये हम लोगों का स्किन से
या आँख से या मार्कस मेम्ब्रेन से अगर इसका कांटेक्ट होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर बर्न क्रिएट कर सकता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, फॉर्म करता है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली on contact with powerful oxidizers and water. That's why it is suggested do not grind or heat sodium. It plays exothermic reaction. It releases heat. ये heat को पैदा करता है. That's why it is falling in the category of exothermic reaction. It falls into the category of paramagnetic. It means it retains no magnetism itself. Being exposed to magnetic field, it is only weakly attracted. Sodium is a metal as it's a good conductor of electricity. It has the property of malleability as well as ductility. When sodium is burned, it makes intense yellow-orange light, or you can say yellow flame. जब सोडियम को जलाया जाता है तब ये येलो ऑरेंज लाइट पैदा करता है या उसका फ्लेम जो होता है वो येलोइश कलर का होता है। इट इज क्वाइट मेलेबल एंड सॉफ्ट, दैट्स व्हाई इट कैन बी कट विद अ नाइफ। ये इतना सॉफ्ट और इतना मेलेबल होता है कि हम लोग इसको चाकू से काट भी सकते हैं। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, the force of attraction between the valence electron and nucleus decreases. तो किस वजह से हम लोग सोडियम को इजीली चाकू से कट सकते हैं? क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही वीक है। That's why it can be easily cut with a knife. The force of attraction binds the metal ions with electrons. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जो मेटल का आयन है इसको इलेक्ट्रॉन से जोड़ के रखता है। इट मीन्स मेटलिक बॉन्ड इज वीकर इन कंपेयर टू अदर मेटल्स इन केस ऑफ सोडियम। टेकिंग टू मच ऑफ सोडियम इन आवर डाइट इट कैन कॉज लाइफ थ्रेट बाय कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एंड इवन स्ट्रोक। बट द गुड न्यूज इज दैट cutting down on or off sodium can help lower our blood pressure and keep our heart healthy. When sodium is cut into pieces, it reacts with the air and becomes dull due to the formation of sodium oxide. Here are some of the tips how we can reduce the intake of sodium so that we can protect ourselves from the health issues. Here health hazards, whatever can arise with our health. So we have to follow those tips. Number 1, buy fresh, frozen and canned vegetables with no salt or sauce added to it. Number 2, always choose packaged labeled with low sodium or reduced sodium or no salt added when available. Point number 3, compare the amount of sodium in different products by reading nutrition facts labels. Our normal blood contains the level of sodium in between 135 and 145 milli equivalents per liter. तो जो हम लोगों का नॉर्मल ब्लड है इसमें कितना मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में मौजूद रहता है, इसका जो अमाउंट सोडियम का वो 135 इन बिटवीन 135 से लेके 145 का बीच में मौजूद रहता है जो नॉर्मल ब्लड होता है उसमें। एंड इट इज मेजर्ड इन मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर इन ईच लीटर। ओके, व्हेन सोडियम इन आवर ब्लड इट फॉल्स बिलो 135 milli equivalents per liter, it causes hyponatremia. So not to forget that sodium is an electrolyte and it helps in regulating the amount of water that is in and around our cells. So it has that very role we have to regret. Here one or more factors are associated with hyponatremia
that one we have to know that ranging from an underlying medical condition to drinking too much water, it can cause the sodium in our body to become diluted. When it happens, the water levels of our body rises and our cells begin to swell. हम लोगों का जो सेल होता है ये फूलना शुरू कर देता है. This swelling can cause many health issues from mild to life-threatening. And now, where the sodium is found? It is found in our table salt, rock salt, pickling salt, and sea salt. Here, soy sauce contains high levels of sodium. Though sodium is essential to our health, but too much is poisonous. So we should be careful to keep ourselves safe from the impact, it means negative impact of sodium. Sodium poisoning can cause seizures, coma, and even death. Here, daily recommended sodium intake guidelines for children and adolescents are from age 1 to 3 years, less than 1200 milligrams should be consumed. Age from 4 to 8 years, less than 1500 milligram of sodium should be consumed, not more than that. Ages from 9 to 13 years, less than 1800 milligram of sodium should be consumed. Till 45 years, we need to follow the same sequence to maintain good health. तो ये सारा उम्र का जो श्रृंखला है, जो टेबुलेशन है, ये हमें मान के चलना है, तब जाके हम लोग अपना एक अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं. Sodium is used as a heat exchanger in some nuclear reactors and as a reagent in the chemical industries. But sodium salts have more uses than the metal itself. The most common compound of sodium is sodium chloride, that is common salt. It is added to food and used to de-ice roads during winter. तो विंटर का सीजन में क्या होता है, हर जगह में बर्फीला का जैसा होता है, ज़्यादा पोलर रीजन में या ज़्यादा कोस्टल एरिया में जिनमें थोड़ा ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो चेंज होने की वजह से जिधर में ठंड ज़्यादा गिरता है, like there Russia in one place is there, so huge cold is there, everything, every edible food items, it get frozen when it is placed outside. That temperature is below minus 65 degrees Celsius. So nothing can be lost in its original form. All get isolated in the form of ice. तो उसको डी-आइस करने के लिए या रोड वगैरह को डी-आइस करने के लिए हम लोग सोडियम को यूज़ करते हैं. सो ये थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ सोडियम के बारे में. अगर इस किस्म का और थोड़ा कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल पर बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.